जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर यूटी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला आज एम्स विजयपुर जम्मू पहुंचे। आपको बता दें कि मैनुअल डिजास्टर मैनेजमेंट बुक रिलीज कार्यक्रम में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने शिरकत की। तो क्या कुछ कहा उन्होंने एम्स विजयपुर जम्मू में पहुंचकर, सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि एम्स जो है जम्मू का ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और एम्स विजयपुर जम्मू की तर्ज पर जो है वो हमारे तमाम जम्मू कश्मीर के जो अस्पताल हैं, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो काम करें, क्योंकि एम्स विजयपुर जम्मू जो है ये माउंट एवरेस्ट है। सबसे पहले इस रिपोर्ट को आप जरूर देखें। Thank you, sir. This is indeed a proud moment for our institution. May I now request our enlighten us with their valuable thoughts. First, I call upon Professor B.S. Sahab. Colleagues and friends, what a great occasion. It is for people like myself to. Doctors should never be the brunt of a physical assault. Lives as on the back burner of life. You can't save everybody. I in the hands of the doctor. I wish all of you, as a part of the. On behalf of the audience, with these words, I would like to invite. Today has been an eye-opener. Very many times I passed by this campus on my way to or from Kathua and places like that, and I've seen the evolution. I've seen it from an empty, barren piece of land to what we see now. And I'm struck by two things. If you find the right place and you find the right person to implement what you want, nothing is impossible. Three and a half years ago, none of this existed. It was a vision of the Prime Minister and his team to spread AIIMS-like institutions across the country. Two things worked to get us here. One, whoever was responsible for identifying the site found one that was easily accessible, required relatively little pre-construction work to be done, but perhaps more importantly, then found a person in the form of Professor Shakti Gupta, who would lead these efforts. And make no mistake, I know it's a team effort. It always is. It would have been impossible for Professor Gupta Sahab to have done this all on his own. But even every team needs a captain. Every team needs somebody to direct it. Every team needs somebody to guide it. When we send the Indian cricket team to play matches, we don't give the power of decision to all 11 players that are going to be on the field. We give the power of decision to one, and it is for them to rally that team behind them. And similarly here, Professor Gupta, without his team, would perhaps not have been, would definitely not have been able to achieve what he's been able to. But I dare say even the team, without the leadership that was given by Professor Gupta, may not have achieved as much as they have been able to do in the short time available. And I'll draw an unfortunate, in some ways even a tragic correlation. Jammu and Kashmir has two AIIMS. We have an AIIMS in Jammu and we have an AIIMS in the valley. You only have to look at the progress of one versus the progress of the other
to realize that what I'm saying is not in isolation. Both AIIMS, if I'm not mistaken, were born of the same government order. Both AIIMS came into existence on paper at roughly the same time. Today, one AIIMS is in a position to impart both healthcare and education. The other one is still a construction site that is, I am sort of being optimistic in saying that perhaps at least a year or so away from being able to perform either of these two duties. Coupled with the fact that what I've seen today in terms of not just the systems that have been put into place, but the equipment that is available, the human resource that has been put together here. It is truly, there are no other words for it. It's truly world class. This is what we wanted. This is what we needed. Otherwise, our patients, for want of these sort of facilities, necessarily had to look beyond Jammu and Kashmir. They had to look at PGI Chandigarh, they had to look at AIIMS, Delhi, they had to look at the Rajiv Gandhi Cancer Institute, they had to look at the Tata Memorial Cancer Institute, and so on and so forth. Today, we finally see health infrastructure in this part of Jammu and Kashmir, which is not now sending patients out, but is actually bringing patients in. Patients from not just the immediate neighborhood, but from beyond that are now looking at AIIMS Jammu as the destination for their treatment. And once this expressway, the Delhi-Amritsar-Katra expressway is complete, I dare say the problem will become of deciding who is able to get treatment here and who isn't. My government will do everything possible to ensure that all of you in the medical profession have a safe environment within which to conduct and carry out your duties, and also the best possible infrastructure. I doubt whether we will ever be able to match what AIIMS Jammu has put in front of us, but we will definitely try. I think this institution now stands for us as the Mount Everest of what the hospital in Jammu and Kashmir should look like, can look like, and hopefully will look like. मुल्क भर के जो 22 एम्स हैं उनके तरफ देखें तो शायद सबसे बेहतरीन एम्स में जो है आज जम्मू का गिना जाएगा। यहाँ पे इलाज हासिल करने के लिए न सिर्फ जम्मू कश्मीर के मरीज़ आते हैं बल्कि आसपास के जो रियासत हैं वहाँ से भी अब मरीज़ यहाँ आना शुरू कर गए हैं। और ये इस बात के बावजूद कि अभी हाईवे पे सफ़र करना इतना आसान नहीं है। जब ये एक्सप्रेसवे मुकम्मल होगा तो मुझे लगता है इस अस्पताल में भीड़ और रश बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो आपने देखा कि किस तरह से आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जिस तरह से आज एम्स विजयपुर में पहुंचे और उन्होंने जो है मैनुअल डिजास्टर मैनेजमेंट बुक रिलीज कार्यक्रम में हिस्सा लिया और उसी के साथ साथ एम्स विजयपुर जम्मू की उपलब्धियां भी गिनवाई। और इसी तरह से उन्होंने कहा कि जिस तरह से कश्मीर वैली में भी जो एम्स बन रहा है, दोनों एम्स जम्मू और कश्मीर वैली की अगर बात करें तो इकट्ठे ही सैंक्शन हुए थे और एक साथ काम भी शुरू हुआ। तो उम्मीद करेंगे कि जो घाटी वाला एम्स है वो भी जल्द बनकर तैयार होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि एम्स जम्मू जो है ये माउंट एवरेस्ट है और हमारे लिए अच्छी बात यह है कि ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को ये कैटर कर रहा है बल्कि बाहर से भी जो है पेशेंट यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा माहौल जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है पेशेंट्स को और पेन फ्री जो फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पर पेशेंट्स को दी जा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि वाकई में ये एक रामबाण है जिस तरह से एम्स जम्मू जो बनकर तैयार हुआ, टाइमली तैयार हुआ और टाइमली इसमें फंक्शनिंग जो है वो शुरू हुई है। और उसी के साथ साथ उन्होंने डॉक्टर्स के हवाले से भी बात की है। डॉक्टर्स को लेकर उन्होंने कहा कि डॉक्टर जो कि भगवान का रूप है, डॉक्टर जो कि पेशेंट को बचाता है, पेशेंट का इलाज करता है, तो डॉक्टर्स के साथ अगर कोई मिसबिहेव करेगा वो चीज़ें जो है वो सही नहीं जाएंगी। जिस तरह से कल भी एक वाक़या जिस तरह से पेश आया जम्मू जीएमसी में, जिस तरह से एक पेशेंट की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे वो काफ़ी गुस्से में आ गए और उन्होंने एक महिला डॉक्टर को जो है वो धक्का मुक्की उसके साथ कर दी। और उसके बाद कहीं ना कहीं जीएमसी जम्मू
कि जो मैनेजमेंट है उन्होंने भी अपनी तरफ से जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक मैसेज भी दिया। तो उन्होंने कहा कि जब तक हमारी सरकार है तो हम डॉक्टर्स को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आने देंगे और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो हम जम्मू कश्मीर में देंगे। और उन्होंने यहाँ के डायरेक्टर शक्ति गुप्ता जी जो एम्स जम्मू के डायरेक्टर हैं उनको ये भी कहा कि हम जितना कर पाएंगे वो हम करेंगे। हमारी जब भी ज़रूरत रहेगी एम्स विजयपुर जम्मू में जो भी उनके लायक कोई काम बताया जाएगा तो उनकी सरकार जो है वो उस कार्य को पूरा करेगी, ये उन्होंने आश्वासन भी दिया है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने उपलब्धियां गिनवाई है। उन्होंने कहा कि वाकई में ये एक बड़ी उपलब्धि है एम्स विजयपुर जम्मू जो कि जम्मू कश्मीर के लोगों को समर्पित किया था केंद्र सरकार ने। फिलहाल गिरीश के जुड़िया जेके मीडिया के लिए।